आपको तो ऑडियो फिर शेयर करना होगा, ऐसे तो इको होगा फिर। म्यूट करने के बाद भी इको होगा। देखिए हेलो, कर लीजिए। Good afternoon, everyone. Today, I and along with my friends are going to deliver some views on the topic habit of organization. It is a book. It is a chapter of a book which is very, very useful and useful in our life, which is the power of habit. This chapter introduced you to the how habit works in an organization, and in this chapter, first we can see that it talks about an Alcoa company, which is a aluminum manufacturing company of USA. In this, the smelting of aluminium was first introduced in this company. So this was running at a quick pace and giving a regular profit. But after coming of competitors of in this industry, the Alcoa company is gradually decreasing. For that reason, the boards of director has announced the new CEO of Alcoa company, who is Paul O'Neill. Paul O'Neill came at the first in this company. When the first interview was there, he talked about the safety of the safety measures taken in the company. By hearing this, some of the investors and the boards of directors may sound like he is talking crazy. He does not talk about how to make this company profitable, but instead of that, he is talking about the safety measures. Some investor at that time has called him the client of his and called his client to sell the stocks of the Alcoa company, but that was a very lame move. And after the coming of Paul O'Neill in Alcoa company, the company's stock has raised and given a five times more than back days, and at that time $27 billion company has been made. Those stock exchangers who have put at that time of the stock $1 million stock, then he would have earned $1 million of dividend from after 5 years. After Alcoa company, Paul O'Neill has a view that if a key point of a habit is stuck, then automatically all the other habits affect the organization.
it creates a ripple in the habits of a person or an organization. So he always started work on a keystone habit, which was in this organization a safety measures. If Paul O'Neill has chosen this safety measures as a keystone, it as it was earlier. Every accidents are every week few accidents are occurring in this company. So he is firstly started to focus on the safety measures, and by this all the companies workers are getting attached to this company, and this led to the growth of the company. For next step, Suyash will be introducing. Good evening, everyone. I Suyash will be explaining about work. Here we are talking about Michael Phelps, who holds the record of most gold medals in the history. During the young age, when Michael Phelps was a child, he was not dreaming about becoming a swimmer. But during one time, Bob Bowman, who was an instructor at that time, saw Michael Phelps swimming in the swimming pool. During that, he saw that Michael Phelps had a nice torso, long hands, and relatively short legs, where he thought that guy can become a champion. In that way, he talked to Michael for becoming a swimmer, but Michael was an emotional character. He was suffering from emotionally because his parents was not able to handle his emotion because his parents were going for a divorce. So that to remove that emotions, Bob gave him a videotape to calm his nerves. Before every match, he told him to play that video, and before sleeping, see that video, and after waking up in the morning, again see that video. Due to that, Michael Phelps' emotions were in control. He was able to compete in the Olympics and win many gold medals. Importance, here we can say importance of small wins. Small wins doesn't mean part to the main goal. It's just a steps towards your main goal. During his 23rd gold medal time in Beijing Olympics, there was an incident where he was warming up before the dive. He was doing everything normally, like the remaining of Olympics he did. But during that time, when he dived into the pool, there was nothing wrong. But when in the second round, when he was coming back, the goggles were filled with water. Due to that, he was not able to see. He was completely blind in the middle of the swimming pool. But the coach, Bob Bowman, his instructor, Bob Bowman, shouted, "Remind yourself, play the videotape." In that instant, when he thought about the videotape, he was able to swim, even though he was blind, and he won. After reaching the check post where he has completed the race, the winner was announced, and
he holds the record for the fastest swimmer in the history. Next slide. Ma'am, in the second part of in the next part, we are talking about Alcoa company where Paul O'Neill was at his home. In the night, when Paul O'Neill was at his home, there he received a call from the branch manager of Arizona, which is the branch of his own company. He received a call that a guy who recently joined was just doing a repairs. During that repair, he accidentally had an accident which caused his death. Due to that, in that moment, Paul O'Neill conducted a meeting in the middle of the night, calling all executives, all top management for the meeting, because during that time, Paul O'Neill's face was screaming that we killed a person. Everyone was shocked. Why are we blaming these things on us? Because in the start, Paul O'Neill's main motive was making the Alcoa's company the safest company in the world. And for further information, thank you, sir. Now let's move on to the keystone of habits. So, by explaining of keystone of habits, we study 3 stories how the keystone of habits are defined. First story is Paul O'Neill. जब गवर्नमेंट के लिए काम करता था पॉल ओ'नील, तब उसके सामने एक केस आया था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यूएस में बहुत हाई था. तब जब उसने रिसर्च किया कि ये क्यों हो रहा है, तब उसे यह पता चला कि इन्फेंट मोर्टेलिटी का कारण है वुमेन्स की लैक ऑफ नॉलेज और मैल नरिशमेंट ऑफ वुमेन्स, जिसके कारण बच्चे 1 साल से पहले ही मर जा रहे थे. इसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है. तो जब उसे ये पता चला, तब पॉल ओ'नील ने यूएस के करिकुलम में टीचर्स को यह सिखाया कि बच्चों को ही अच्छे से पढ़ाया जाए कि वह हेल्दी डाइट ले सके. तो हमें इससे यह कीस्टोन हैबिट पता चलता है कि जब आप एक करिकुलम एक्टिविटी को चेंज करते हैं तो इससे एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है, जो कि टीचर्स के लिए फायदेमंद हुआ और वुमेन के लिए भी हेल्दी हुआ कि वो हेल्दी डाइट ले सके, और जिससे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुई है. सेकेंड स्टोरी इज कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एक रिसर्च किया था 1600 पीपल्स पे, कि जब उन्हें कहा गया था 1600 पीपल्स को कि वो अपने खाने को रिकॉर्ड करें हर एक बार पर वीक में, हर हफ्ते में एक बार, जिससे उन 1600 पीपल्स को पता चला कि वो अनहेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हैं पर वीक. तो उन्होंने उसे चेंज करते हुए, जब कंज्यूम कर रहे थे, जब उन्हें यह पता चला कि वो अनहेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन्होंने इसे चेंज किया और अपने हैबिट्स में लाया कि अब हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए. जब भी वो डिनर करते थे तो वो स्नैक की जगह, अनहेल्दी फूड की जगह हेल्दी फूड लेने लगे. तो इससे यह पता चलता है कि हमारे कीस्टोन हैबिट में अगर हम लोग अपने एक पर्टिकुलर टाइम टेबल को फिक्स करें और हेल्दी फूड का डाइट चार्ट बनाएं, तो हम लोग उसे फॉलो करेंगे रेगुलर, जिससे कि हम लोग हेल्दी रहेंगे. थर्ड स्टोरी इज रॉबर्ट बार्टन, जो कि पॉल ओ'नील की कंपनी एल्कोआ कंपनी में काम करता था. रॉबर्ट बार्टन मैक्सिको के ब्रांच में काम करता था एल्कोआ कंपनी के, जहाँ पे उसने यह बात छुपाया कि उसके कंपनी में गैसेस लीक होते थे, गैसेस फ्यूम्स बनते थे, जिससे वर्कर्स की हेल्थ इश्यूज आते थे. पर उसने अपने हेडक्वार्टर को नहीं बताया, पॉल ओ'नील को नहीं बताया,
जिसके कारण पॉल ओनील ने उसे फायर कर दिया कंपनी से, यह कहते हुए कि तुमने कंपनी का कल्चर खराब किया है। पॉल ओनील ने पहले मैक्सिको जाके रिसर्च किया था, मैं इन्वेस्टिगेशन वो ये सब नन पहले मैम पॉल ओनील को जब नन ने बताया तो पॉल ओनील ने खुद इन्वेस्टिगेट किया, तब उसे पता चला कि वो रॉबर्ट बार्टन का गलती था, जिसकी वजह से रॉबर्ट बार्टन को फायर कर दिया गया उस कंपनी से। तो यह कहते हुए कि वर्क कल्चर को जो भी खराब करेगा, जो भी हैबिट को बिगाड़ेगा कंपनी में, उसे बिल्कुल भी फायर कर दिया जाएगा, चाहे वो कितनी हेड पोस्ट पे क्यों ना हो। यस, तो ये तीन की स्टोन्स इस चैप्टर में बताए गए हैं, जैसे कि हम लोग अपने हैबिट्स को चेंज करें, किसी एक पर्टिकुलर हैबिट को पकड़ के उसे हम लोग अपने लॉन्ग लाइफ में काम ला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। स्मॉल विन आप लोग शो किए, फिर लास्ट में जो कंक्लूजन हुआ और बेहतर तरीके से कौन बता पाएगा? मतलब आप लोगों के लिए कैच वर्ड क्या था, की पॉइंट क्या था, सीखने लायक पॉइंट क्या था इस चैप्टर से? और बाकी एक्टिविटी अपने आप फॉलो होता चला जाए, राइट? जैसे यहाँ स्मॉल विन में आप ये बताएं माइकल फिलिप के बारे में, ये स्मॉल विन क्या है वो थोड़ा इलॉबरेट करना चाहिए था। लाइक स्मॉल विन उसमें माइकल फिलिप के लिए क्या था? डेली वो रूटीन पे उठना, जो उनका डाइट था याद है, वो प्रोटीन शेक और क्या एग वगैरह जिस दिन वो नहीं खाता था, तो दैट वो विन नहीं मानता था, तो हर दिन उसका एक विन है। ठीक है, तो वही छोटा छोटा विन आपको फाइनली वहां पे ओलंपिक का विनर बनाया। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ऊपर लें, अब छोटा छोटा विन से कैसे आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं? खुशी, फोकस, ऐसा होता है क्या? नहीं, जब यहाँ जब बोल रहा होता है कोई तो आप लोग बात करते हैं क्या आपस में? ऐसे हो गए क्या आप लोग? यहाँ जब प्रेजेंटेशन दे रहा था आप लोग कुछ घुस करके कुछ काम कर रहे थे, इधर आप लोग सुयस क्या क्या बात कर रहे थे। पता है जो यहाँ प्रेजेंट करता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, तो जो यहाँ खड़े होके बोलता है ना, तो प्लीज उसको थोड़ा वैल्यू किया कर। वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, बार बार उसका ध्यान उधर जा रहा था, उधर जा रहा था, वो नहीं बोल पा रहा। ठीक है, तो जब जो वहां खड़ा रहे, जो बोले उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करिए, और जो भी काम कर रहे हैं सबको होल्ड पे डालिए और उसी के तरफ देखिए। ठीक है, उसको भी अच्छा लगता है, जो भी प्रेजेंटर होता है उसको भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्या बोल रही थी, लाइक आपका जो भी टारगेट है, सीए बनना है, जो भी टारगेट अगर आपका होगा, सबका अलग अलग टारगेट होगा, मुझे नहीं पता किसका क्या टारगेट है, तो वो छोटा छोटा विन कैसे होगा? जब आप डेली, हो सकता है कोई कोचिंग ज्वाइन किए हो सकता है यहाँ क्लास में आपका अकाउंट्स वगैरह का क्लासेस वगैरह होता है, घर जाके डेली हम वो चीज कंप्लीट कर पा रहे हैं, दिस इज अगेन स्मॉल विन फॉर यू। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर का टाइटल क्या था? यही होता है कि स्टोन हैबिट की एक एक्टिविटी और स्मॉल विन। ठीक है, वो अगर हम पकड़ लें तो अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और इसमें था जो बिलीफ के बारे में बात हो रही थी। बिलीफ जो टोनी डंगी भी बोल रहे थे, और यहाँ भी कहीं तो लास्ट में किया, मिडिल ऑफ द सेशन में कहीं बिलीफ का भी डिस्कशन है कि ये सबके बावजूद आपको बिलीव करना होता है। लाइक माइकल फिलिप को जो उनके कोच ने कंटिन्यूसली वो वीडियो टेप देखने को कहा था, विजुअलाइज करने को कहा था, विजुअलाइज करके वो क्या एक तरीके से हैबिचुएटेड हो रहा था, वो विन को विजुअलाइज करना उस तरीके का उसको हैबिट हो गया था, है ना? डेली वो वीडियो इसी पर्पज से ही दिखाया जाता था कि उसको यूज टू हो जाए विन देखना, है ना? इसीलिए वो वीडियो दिखाया जा रहा था, राइट? और फिर एक वॉक वाला डिस्कशन आप किए थे कि कुछ प्रॉब्लम हो गया था वॉक में, ग्लास उसका टूट गया था, लेकिन फिर भी वो जीता। क्यों जीता? और
विजुअलाइज नहीं, प्रैक्टिस करवाया गया था, कोच ने उसको वो अंधेरे टनल में प्रैक्टिस करवाया था। ठीक है, कि जब भी एक तरीके से विजुअलाइज कर लो कि हाँ क्या क्या एडवर्स सिचुएशन आ सकता है हमारे लाइफ में, एंड ट्राई टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, ये सारा चीज उसमें स्टोरी में है मेंशन। ठीक है, स्लाइड तो लगभग था ही नहीं, मतलब साइड पे मेहनत एकदम नहीं किया गया है। क्या? रियलिस्टिक नेम लगा यहाँ इस बुक में, जो भी आप कैरेक्टर देख रहे हैं सब नोन है। सब सारा चीज, सारा रिसर्च बेस्ड है। जितना भी आप चीज देख रहे हैं वो रियल है, रियल लाइफ पे एक्सपेरिमेंट किया गया, रियल लाइफ पे रिसर्च किया गया। आप लोग चेंज हो गए सीरियस। फर्स्ट सेम और थर्ड सेम है ना, जमीन आसमान का अंतर हो गया। पर एक ही चीज आपको पता है, बार बार बोलना पसंद नहीं है। कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? कुछ पूछना है? और पीपीटी में ज्यादा इलॉबरेट में करने बोली नहीं थी, बट जो टॉपिक है वो टॉपिक तो आप लिखेंगे ना। लाइक इस केस में माइकल फिलिप, ये आप लिख सकते थे। फिर एक और केस आप जो एम्प्लॉय का डिस्कशन किए थे, ठीक है, वो पॉइंटर लिख सकते थे। गवर्नमेंट के लिए वो काम करता था पोलोनी, वो पॉइंट लिख सकते थे। फिर पॉइंट को आप फर्दर इलॉबरेट करिए, लास्ट में कंक्लूजन तो जरूर मेंशन करेंगे आप, है ना। ये सब तो कम से कम पीपीटी में होना चाहिए। लास्ट में सबका कंक्लूजन कि आपके लिए टेक अवे क्या था उस चैप्टर। नेक्स्ट ग्रुप किसका है? चैप्टर 5 स्टारबक्स। स्टारबक्स आपके फर्दर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, उसमें तरीका बताया गया स्टारबक्स पे, वो जरूर फोकस करेगा। उसमें एक लैटे मेथड है ना, कैसे आप कोई भी एडवर्स सिचुएशन को हैंडल करेंगे, वो सब स्टारबक्स में बताया गया। सर्टेन रिसर्च वगैरह है उसमें, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट है, फिर कुकीज और रेडिस एक्सपेरिमेंट है, वो सब जरूर मेंशन करेंगे। और वो आपके लिए सीखने वाला चीज है, क्योंकि कल को आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि बॉस ही खड़ूस मिल जाता है कई बार, ठीक है, या नहीं तो जो भी क्लाइंट होते हैं वो ठीक से पेश नहीं आएंगे आपके पास, या फिर घर में भी भाई मम्मी मूड में नहीं है, तो उस वो सारे सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है, कैसे हैंडल करेंगे, वो सारा चीज उसमें मिलेगा। तो की टेक अवे भी लास्ट में जरूर देगा, ठीक है। वैसे अब कोई भी सब्जेक्ट में कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है आप लोगों का। हाँ, ये अनाउंसमेंट बहुत जल्दी मिल ही जाएगा सारे सब्जेक्ट में। कभी भी अचानक से जैसे क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पेपर दे दिया जाएगा, आंसर शीट दे दिया जाएगा, और वो रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये सरप्राइज यूनिट टेस्ट का प्रोविजन आ रहा है, आ गया है इनफैक्ट, ये भी महिमा है। 2, अच्छा। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि नहीं? दे रहे हैं ना? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. हाँ, इतना ख्याल क्यों कर रहे हैं? पार्टी शार्टी मिलने वाला है क्या? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30, 32. ओके, स्पीच में भी कुछ लोग जो बोलने वाले हैं पार्टिसिपेट करिए, और जो शाय नेचर के हैं वो थोड़ा आगे आइए, लाइक सुयस, खुशी, और इधर निकिता, आप लोग, और संजलि, आप लोग पार्टिसिपेट करिए, और इधर जो लोग नहीं बोलने वाले हैं वो थोड़ा प्रैक्टिस करिए। वो डेट अनाउंस नहीं होना तो इसी वीक था, लेकिन अनाउंसमेंट ही नहीं हो पाया। मैं भेजती हूँ संजना, मैं आपको भी भेज रही हूँ, लेकिन शायद